Krishna
Guru Srila Prabhupada ki, Ananta Guru Vaishnavin ki, Nam Chai Sahailas Thakur ki, Prem Suho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nanda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaur Bhakta Vrinda ki, Say Sri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki, Vrindavan Dham ki, Dham ki, Durga Dham ki, Navri Dham ki, Jagannath Dham ki, Jamuna Mai ki, Ganga Mai ki, Tulsi Maharani ki, Bhakti Devi ki, Sambhira Bhakti Vrinda ki, Srila Prabhupada ki, Sri Jagannath Baladev Subhadra ki, Shri Gauranatai ki, Iskan Udayapur ki, Gopremanandi. All glories to the Supreme Buddha. All glories to the Supreme Buddha. All glories to the Supreme Buddha. All glories to the divine Buddha seat of Sri Sri Guru and Gauranga. Krishna Sadamo Bhagavate Gamagana Visaha Kalana Sadashamesha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are in the last verse, text 40 of the third canto, chapter 6. And who's speaking to who? Who knows who's speaking to whom? Okay, fine. We've got Sutra Goswami, and then we've got the sages at Namashranya. Then we've got Yavyartanta Vachas Cha Manasa Saha Aham Chanye Ime Devas Tasmai Bhagavate Namaha Yato Prapya Nyavartanta Vachascha Manasa Saha Aham Chanya Ime Devas Tasmai Bhagavate Namaha Yato Prapya Nyavartante Ta Vachascha Manasa Saha Aham Chanya Ime Devas Tasmai Bhagavate Namaha Yato Prapya Nyavartanta Vachascha Manasa Saha Aham Chanye Ime Devas Tasmai Bhagavate Namaha Yato Vachascha Manasa Saha Tasmai Yato Prapya Navartanta Yato Prapta Navartanta Vachascha Manasa Saha Aham Chanye Ime Devas Tasmai Bhagavate Namaha Yato Prapya Navartanta Yato Prapya Navartanta Vachascha Manasa Saha Aham Chanye Ime Devas
Vaishnavis. Yato prapya nivartanta. Yato prapya nivartanta. Vachascha manasa saha. Vachascha manasa saha. Aham chanyai me deva. Aham chanyai me deva. Tasmai bhagavate namaha. Tasmai bhagavate namaha. All right, you can do the word for word. शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शब्दपाठ के द्वारा शब्दपाठ की जय। शब्दार्थ यतः जिसने अप्राप्य माप न सकने के कारण निवर्तन्त प्रयास करना बंद कर देते हैं वाचः शब्द ही मनसा मन से सह सहित अहम च अहंकार भी अन्य इमे ये सभी देवः देवतागण तस्मै उस भगवते भगवान को नमः नमस्कार करते हैं अनुवाद अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द मन तथा अहंकार पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं। अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। तात्पर्य कूप मंदुक आकलक यहाँ आपत्ति उठा सकता है कि यदि भगवान वाणी मन तथा अहंकार के नियंत्रण देवों द्वारा जो कि क्रमशः वेद ब्रह्मा रुद्र तथा बृहस्पति इत्यादि देवता है अज्ञेय है, तो फिर भक्तगण इस अज्ञात वस्तु में इतनी रुचि क्यों दिखाए? इसका उत्तर यहाँ है कि भक्तों को भगवान की लीलाओं को जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वाद नहीं कर लेता तब स्वाभाविक है कि वहाँ अपने चिंतन तथा मनगढ़ंत निष्कर्षों से वापस लौट आएगा, क्योंकि वहाँ उन्हें न तो वास्तविक मानेगा न आनंद बढ़ेगा। भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, जैसा कि वैदिक स्तोत्रों में पुष्टि हुई है। ओम तत् विष्णु सर्वं परम सदा पश्यन्ति सूरयः। भगवद गीता में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। वेदश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः। मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान कृष्ण को जानना चाहिए और व्यर्थ ही अहम अर्थात मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि भक्ति है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या मां विजानन्ति यावन् यशस्वी तत्त्वतः। केवल भक्ति द्वारा यहाँ जाना जा सकता है कि परम सत्य भगवान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनके अंश हैं। इसकी पुष्टि इस श्लोक में महर्षि मैत्रेय द्वारा की गई है। वे भक्ति भाव से भगवान को भगवते सादर नमस्कार नमः करते हैं। मनुष्य को मैत्रेय तथा विदुर, महाराज परीक्षित एवं शुकदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, और यदि वहाँ उनके परम स्वरूप को जानना चाहता है तो जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा में लग जाना है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विश्व लोक की सृष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। Om Agnatavarandasya Gyanagana Salakaya Chakshushamuditangina Tazarishi Gurave Namaha. All right, the absolute truth is unknowable. ठीक है, जो परम सत्य है वो अज्ञात है।
It's beyond words. वो शब्दों से परे है। Then why are we speaking? तो फिर बोल क्यों रहे हम? Why are we sitting here in Bhagavatam class? तो यहाँ भागवतम के कक्ष में क्यों बैठे हैं हम? What it means is Krishna is unknowable by any material means. तो इसका अर्थ ये है कि कृष्ण जो है वो अज्ञात है कि हम अपने जो भौतिक चीजों से तरीके से हम कृष्ण को नहीं जान सकते। He's unknowable by our material calculations. तो भौतिक कैलकुलेशन से हम नहीं जान सकते भगवान को। Oh, God can do this, but he can't do that. ये सोचे कि भगवान ये कर सकते हैं पर ये नहीं कर सकते। He can create unlimited universes, तो वो असीमित सृष्टि कर सकते हैं, ब्रह्मांड बना सकते हैं। but he can't come as a small cowherd boy and lift Govardhan Hill. और एक छोटे से ग्वाल के रूप में और गोवर्धन पर्वत को उठा नहीं सकते वो। He can expand into the heart of every living entity, तो हर किसी जीव के हृदय में वो अपने विस्तार कर सकते हैं। but he can't dance with the gopis in Vrindavan. पर गोपियों के साथ नृत्य नहीं कर सकते वृंदावन में। So they have all their material calculations. तो ये सब भौतिक ना कैलकुलेशंस होते हैं। If the absolute is unlimited, अगर परम सत्य असीमित है, then why are you Vaishnavas limiting him to a form? तो उनको क्यों सीमित किया जा रहा है? आप वैष्णवगण ना उनको रूप के उसके दायरे में उनको सीमित कर रहे हैं। Now, can anyone here name for me a form that we see every day? तो क्या कोई यहाँ ये बता सकते हैं कि एक ऐसा रूप जो हर रोज हम देखते हैं? Wait a minute. A form that's present everywhere ऐसे रूप जो हर जगह मौजूद है and all powerful, और बहुत ही शक्तिशाली है, yet localized. पर एक ही जगह पे है। And this Mataji, with enthusiasm, said, और ये जो उत्साहित माता the sun. का सूर्य। Now, the creator of unlimited suns, तो you can point to it. There it is. You have the sun globe. You can see it. And it's shining everywhere. तो जिन्होंने इतने सारे असीमित सूर्यों का निर्माण किया, तो सूर्य को हम देख सकते हैं आकाश में एक जगह पे है और रोशनी दे रही है। And the creator of unlimited suns can't have a form that's simultaneously present everywhere in every atom and everyone's heart and also standing before us? तो क्या जिन्होंने ये सूर्य अगेनिस्ट असीमित सूर्यों का निर्माण किया, क्या उनके पास रूप नहीं होगा? क्या उनके पास रूप नहीं हो सकता है कि वो हर किसी के लिए और सर्वव्यापी हो सकता है और एक जगह पे भी रह सकता है? क्या वो ये नहीं कर सकता है वो? Share with me the consistent logic of that. ये लॉजिक क्या है उसके पीछे? Prabhupada makes a call for sanity here. तो यहाँ प्रभुपाद जी जो है वो पागलपंती का खंडन कर रहे हो। That if I want to know the infinite, अगर असीमित को जानना है मुझे, Prabhupada liked the saying, you cannot take the kingdom of God by storm. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवत धाम को आप जबरदस्ती नहीं जा सकते। So we give up and go home? तो हम क्या करें? सब कुछ छोड़कर घर जाएं? No. Prabhupada said, and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, we act in such a way that the Absolute will be pleased to reveal himself to us. तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि ऐसे कार्य हमको करना चाहिए कि जो परम सत्य है वो खुद ही हमारे सामने वो आए। It is a revelatory process. ये अपने आप वो स्फुरित होता है। It's a standard example, but I'm going to use it again. तो ये स्टैंडर्ड उदाहरण है जो महाराज लेते हैं, तो वो फिर से बताएंगे। Suppose before I sat on this seat, कि मान लीजिए महाराज जब आसन पे बैठे थे, this mischievous young man right here, ये जो नटखट बच्चा है, युवक है यहाँ, तो उन्होंने I'm using you as an example. I don't have psychic powers, don't worry. आपको उदाहरण के रूप में, Although you might be a mischievous boy, we don't know. शायद नटखट हो गया हो जाते हैं। Suppose he'd poured glue on this seat. तो मान लीजिए आसन पे उन्होंने ग्लू फेविकॉल लगाया। Now I've sat in it and I am glued to this seat. तो महाराज बैठ गए इस आसन पे और चिपक गए इस पे। Now I want to shake hands
with this gentleman right here. तो इस सज्जन से महाराज हाथ मिलाना चाहते हैं। I'm limited. महाराज सीमित है। I can practice yoga. योगा के माध्यम से महाराज कुछ कर सकते हैं। I can do some exercises. I can maybe get a couple inches more. कुछ व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। I can go to a chiropractor, get my back fixed. तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अपने पीठ को ठीक कर सकते हैं। That'll give me a couple more inches. तो कुछ और मिल जाएगा महाराज। But I can only reach this far. पर इतनी दूरी में पहुंच सकते हैं महाराज। Can I shake hands with him or not? पर उनसे हाथ मिला सकते हैं कि नहीं? We have a no advocate. We have any other no advocates? Can I or can't I? Yes or no? Wake up. No. We have no advocates. I know what Mataji is saying. We have no advocates. Do we have any yes advocates other than Mataji? Any yes advocates? We have a yes advocate. How is it possible, sir? It's a visual. Stand up. If he takes the initiative and comes to me, come on, come on. I don't bite, I'm vegetarian. Come on, come on. Then it becomes very easy. Okay, you can sit, thank you. It becomes a very easy thing. So, with all of their, if I have, well, wait a minute. We've got our electric, whatever it is called, electromagnetic telescopes. They can see tiny, microscopes can see tiny nano, whatever it is, तो ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिसे हम परमाणु को भी देख सकते हैं। And I've got my Hubble telescope out there in space, so I can see to the edges of the creation. तो हबल टेलीस्कोप से हम सृष्टि के सीमा तक देख सकते हैं। So I just have to keep extending it. Eventually I'll see it. तो ये सोचते हैं और उसको और एक्सटेंड करेंगे, बड़ा करेंगे तो आखिर में हम देख पाएंगे। What is your counter, O Vaishnavas? तो वैष्णव इसका खंडन कैसे करेगा? If I take imperfection times imperfection times imperfection, will I eventually equal imperfection to the nth power? Will it ultimately equal perfection? अगर अपूर्णतया को अपूर्णतया से उसको मल्टीप्लाई करते रहे, क्या हमको पूर्ण मिलेगा? Yes or no? Imperfection times imperfection times imperfection. If I do it enough times, I'm going to get perfection? No. No. So here it's saying, stop trying in that way. It's not saying the absolute's unknowable. यहाँ कह रहा है कि भौतिक तरीके से परम सत्य को जानने के प्रयास बंद कीजिए, पर ये नहीं कि परम सत्य को हम नहीं जान सकते। In fact, Krishna said, what is it? Janmaisvarya Shruti Shivira Edamana Manapuman Navaharti Abhidatu Tvam Kinchana Gotram. Kunti Devi says, Krishna is easily knowable. तो कुंती महारानी ये श्लोक बताते हैं भागवत में कि कृष्ण को बहुत सरल तरीके से जान सकते हैं। But not by those who are overwhelmed with material desires. They can't understand Krishna. उनके द्वारा नहीं जो बहुत ही भौतिक इच्छाओं से ग्रसित है। So Krishna, because Krishna is understood, he's a jita, he's unconquerable. तो कृष्ण अजीत है, उनको जीता नहीं जा सकता। And yet that same Krishna is carrying Nanda Maharaj's shoes. और वही कृष्ण नंद महाराज के पादुका को उठा रहे हैं। He's driving Arjuna's chariot. अर्जुन के लिए सारथी बन गए वो। He's bound up by Mother Yasoda. और माँ यशोदा को बांध रहे हैं। So we should relish, like it's saying here, that one has to relish. तो आस्वादन करना चाहिए हमको। How wonderful Krishna is. कि कितना अद्भुत है कृष्ण। Krishna is so here. He's so powerful. This whole section has been describing, this whole chapter, how creation unfolds. Now I don't want to criticize anybody, but the Bible has a few verses called Genesis, how the creation, there was God, and then there was light, and then there was the Word, and the Word became flesh. So they have a few verses.
इसमें सृष्टि के बारे में बताएगा कि भगवान थे, फिर रोशनी हुई, फिर रोशनी से आवाज हुई, आवाज से नमाज, ये सब है। But the Bhagavatam has chapters and the whole fifth canto. Well, not the whole fifth canto, but much of the fifth canto is explaining about the universe. तो भागवतम में कई अध्याय हैं, पूरा लगभग एक स्कंद है, उसमें सृष्टि के बारे में बताया गया। And this whole section, this chapter is cause and effect. This happens first, and from this unfolds, and from this unfolds. तो इस अध्याय में बताया गया कि कैसे सृष्टि होती है, कि कुछ होता है, उसके परिणाम होता है, उस परिणाम से कुछ और परिणाम आता है, तो ऐसे बताया गया इसमें। As Prabhupada said, the Bhagavatam is the PhD study of theology. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवतम जो है वो PhD अध्ययन है थियोलॉजी का, भगवान के रिलेटेड जो स्टडी होता है। Let me give you another example. एक और उदाहरण देंगे महाराज। In the Bhagavatam, भागवतम में Kapila Muni कपिल मुनि describes how the living entity develops within the womb of the mother from the point of conception. तो माँ के पेट में जो जीव है वो कैसे विकसित होता है, उसमें वर्णन किया गया कपिल मुनि के द्वारा। Describes the whole process from the original seed and the egg from the mother and how it emulsifies, प्रक्रिया पूरा बताते हैं कि कैसे conception होता है, सब कुछ and then how the body develops, and it develops 9 gates, 9 holes. The whole thing is there. तो कैसे शरीर विकसित होता है, कैसे जो 9 द्वार है वो विकसित होता है, सब कुछ बहुत ही बारीक तरीके से। At 7 months, the child becomes conscious in the womb. तो 7 महीने के बाद जो है चेतना आती है। They did not even know that the body had a circulatory system until the beginning of the Renaissance. तो रेनेसांस In the West. पीरियड होता है पाश्चात्य देश में, तो उससे पहले उनको पता नहीं था कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कि खून कैसे शरीर में। Until they started doing dissections and had ultrasound, they didn't even know exactly how the child developed in the womb. तो जब तक डाइसेक्शन या अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, तो उनको पता नहीं था कि बच्चा कैसे विकसित होता है पेट में। I mean, these are developments in the last few hundred years. तो कुछ 100 साल पहले उनको पता चला कि ये सब कैसा होता है। But in our Vedas, पर वेदों में, and the ripened fruit of the Vedas is the Bhagavatam, और ये जो भागवतम है, ये वेद रूपी वृक्ष के सबसे पक्का फल है ये। these things are deeply described in detail. तो बहुत बारीक तरीके से समझाया गया उसमें। So we should always have the deepest respect for Srimad तो Bhagavatam. बहुत आदर होना चाहिए भागवतम के लिए। Everything's in the Bhagavatam. सब कुछ है भागवतम में। Now, let's see what else I was going to say. Because this is the last verse in the chapter, so it's time to do a little summary on the chapter. तो ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, तो एक सार देंगे कि इस अध्याय में क्या हुआ। And it has a purpose. और इसका एक लक्ष्य है। It has many purposes. But one of those purposes is एक लक्ष्य ये है, when we see how everything unfolds from Krishna, तो जब हम देखते हैं कि कैसे सब कुछ विस्तारित होता है कृष्ण से, and everything is sustained by Krishna, और कृष्ण सब चीजों का पालन करते हैं, and everything depends on और Krishna, सभी चीज जो है कृष्ण पे निर्भर होता है, what should develop in our heart? तो हृदय में क्या विकसित होना चाहिए। For example, उदाहरण, I meet people all the time महाराज कई लोगों से मिलते हैं who say with great pride, जो बहुत ही अहंकार के साथ कहते हैं, as if that's the conclusion of the process, उनको लगता है कि ये सार है प्रक्रिया की। they say, I pray to God. वो कहते हैं मैं तो भगवान से प्रार्थना Oh, but करता हूँ। Swamiji, I pray to God. ओ स्वामी जी, मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान को। I'm supposed to be impressed. क्या महाराज को इम्प्रेस होना चाहिए? How can you not pray to God? ये मुमकिन कैसे है कि आप भगवान से प्रार्थना करते हैं? Again, Prabhupada calls to sanity. What sane person does not pray to God? तो कौन से धैर्य सब ये व्यक्ति है जो भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं? If you get a check in the mail, it arrives in your mailbox, तो अगर आपको अपने लेटर बॉक्स में एक खत आता है, 30,000 rupees arrives in your check, in your mailbox every month. 30,000 का चेक आता है आपके लेटर बॉक्स में हर महीने।
from an anonymous donor. कि कोई अज्ञात डोनर ने आपको दिया है, You're a householder. It comes in your private mailbox. तो आप गृहस्थ हो तो आपके लेटर बॉक्स में आता है ये, And you cash it and it clears. और बैंक में उसको कैश करते हैं और आपको मिल जाता है वो पैसा, And it's coming every month. और हर महीना आ रहा है। Several emotions and questions would arise in a sane person. कई भावनाएं आएंगे उस व्यक्ति के हृदय में, कई ना प्रश्न आएंगे। What's one of the first questions that would arise? तो सबसे पहला जो प्रश्न जो आएगा मन में वो क्या है? Who sent it? कौन भेज रहा है? भेज रहा है? Somebody's sending it to me. तो कोई भेज रहा है तो कौन है वो? Then what's another question that arises? तो दूसरा प्रश्न जो आता है, Do I have an why? Do I have an obligation? क्यों, क्या मुझे Do I, करना है क्या? have I sold my kidney and I don't know it? What's going on here, मैंने you know? अपने किसी को भेज दिया और मुझे को पता ही नहीं, तो क्या मुझे पैसा देना पड़ रहा है? And when you realize it's coming from an unknown friend कि जब आप ना कि ये रियलाइज करते हैं कि कोई अज्ञात मित्र who, से मिल रहा है, who simply cares about you, who simply wants to help you, जो केवल आपका ध्यान रखना चाहते हैं, जो केवल आपकी मदद करना चाहते हैं, unless one's heart is not stone, कि अगर आपका हृदय पत्थर का नहीं है, or as Bhagavatam says, unless one has a steel-framed heart, जैसे भागवतम कहते हैं जैसे लोहे का हृदय है आपके, तो what emotion arises? तो कौन सा भाव आएगा मन में? What emotion arises? कौन सा भाव आएगा? Gratitude, love, appreciation. कृतज्ञता, प्रेम, appreciation। So, I pray to God. Of course you pray to God. हाँ, जब कहते हैं कि दावा करते हैं कि So- भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो So, हाँ, if ये भी one भगवान है। I'm sorry. If one goes through this progression, तो इसी रास्ते पे जाते हैं हम, तो phone off. फोन को बंद कीजिए। Yeah, phone. If your phone rings again, you got to put 500 rupees in the hundi. अगर फोन जैसे बजता है तो दान पेटी में आपको 500 रुपए देना। At this point, everyone shuts off their phone. तो आप सब Earlier, फोन- they don't. When I ask, nah, 50%, leave it on. Phone rings, 500 rupees in the hundi. अगर फोन बजता है, 500 रुपए- People double check at this point. So, if one goes through this progression, तो इसी रास्ते पे चलते कोई, wait a minute. This world is not happening by chance. तो वो सोचेंगे कि ये I challenge you. ये जो I've made this challenge. It has never been answered. Maybe this group can help me. महाराज कह रहे हैं, उन्होंने ये चैलेंज दिया कई लोगों से, पर किसने उत्तर नहीं दिया अभी तक, शायद आप लोग देंगे। Can you give me one single example तो आप केवल एक ही उदाहरण दीजिए where there is form, pattern, design? जहाँ रूप होता है, पैटर्न। Yeah, this man's tuned in. Yeah, you're going to try. Where there's form, जहाँ रूप होता है, pattern, पैटर्न होता है, design डिजाइन होता है, that has no intelligence और behind उसके it. पीछे कोई बुद्धि नहीं है। Give me one example. एक उदाहरण दीजिए आप। Just like we came here, we're sitting down. जैसे यहाँ आए हम बैठ रहे हैं, The microphone is here. The temple room is nice. It's nice and clean. The deities are dressed. माइक्रोफोन है, जो मंदिर है बहुत साफ है, भगवान यहाँ विराजमान है। Did it happen by chance? क्या ये बस अपने आप हो गया? You leave something alone, it decays. It doesn't improve. तो अगर कुछ चीज को अकेले Isn't it? रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, वो और अच्छा नहीं बनता है। We leave this room. We come back 6 months. What to speak of 10 years? Everything's broken and falling. Things decay. They devolve. They don't evolve. तो अगर इस कक्ष को छोड़कर जाते हैं, 6 महीने बाद आते हैं, 10 साल बाद आते हैं, तो सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ना कि और अच्छा नहीं बन जाएगा। It's one of the basic laws of entropy, one of the basic laws of physics. तो एंट्रोपी का ये एक नियम है, या फिजिक्स का ये एक नियम है। By the laws of friction, things decay. फ्रिक्शन के नियम से क्या होता है, सब कुछ खराब हो जाता है। They don't improve. और अच्छा नहीं बनता है। They don't be. Things do not evolve from simple to complex. तो जो चीजें हैं वो सरल से कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। Things come from complex. They break down to small parts. That's what happens. तो कॉम्प्लेक्स चीजों जो है वो बारीक होता है समय के साथ। Therefore, the Bhagavatam's call to sanity. इससे भागवतम जो है ये धैर्य होने के लिए वो बोल रहा है। Therefore, this progression. इससे ये उन्नति होता है, प्रगति होती है। Wait a minute. Things are not going on by. It's the first step in God realization. Second chapter Bhagavatam. ये दूसरा स्कंद का ये है कि
भगवान का साक्षात्कार जो है तो उसमें ये बताया गया Things do not happen by chance. कि चीजें जो है अपने आप नहीं होता है Things are happening by intelligence. कि बुद्धि के द्वारा चीजें होती है Intelligence means person. और बुद्धि का मतलब है कि एक व्यक्ति है And that person is providing everything for me. और वो व्यक्ति सब कुछ दे रहे हैं हमको Prabhupada said, you'll feel the sun someday like your lover's embrace. तो एक प्रभाव कह रहे हैं एक दिन आपको सूर्य के किरण ऐसे महसूस होगा जैसे कोई प्रेमी आपका आलिंगन कर रहा है Prabhupada said, you think you're sitting on the floor, I'm sitting on the hand of Krishna. प्रभाव कहते हैं कि आपको लगता है कि आप फर्श पे बैठे हो मैं तो कृष्ण के हाथ पे बैठा हूँ So once we realize that we're very small, जब हम ये साक्षात्कार करेंगे कि हम बहुत तुच्छ हैं I know that I'm not making the sun and the moon arise. कि हम तो जानते हैं कि सूर्योदय या चांद को नहीं हम कर रहे हैं You know, I don't even know, how many hairs are on my head or how I'm digesting my food. और हमको तो पता भी नहीं है कि सिर पे कितना बाल है या कैसे हमारा जो खाना है उसका डाइजेशन हो रहा है Krishna in Bhagavad Gita gives the different qualities of knowledge. तो कृष्ण भागवतम में ज्ञान का कई लक्षण बताते हैं And he gives the precursor to knowledge. और वो बताते हैं कि जो सबसे पहला गुण है And- ज्ञान के लिए वो क्या होता है And Prabhupada doubles down on it in the purport. और प्रभात और भी विस्तार से लिखते हैं अपने तात्पर्य में The first step in knowledge is humility. जो सबसे पहला जो कदम है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो है विनम्रता I'm very small. मैं बहुत तुच्छ हूँ I'm finite. मैं सीमित हूँ Knowledge of the infinite is revelatory. और जो ज्ञान है परम सत्य के बारे में वो अपने आप स्फुरित होते हैं And the culmination of that whole thought process, that there's something that it's not happening by chance. ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है There's got to be an intelligent organizer behind it. कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसके पीछे That organizer is providing the sun, the moon, the rain, everything, food, Anna, everything is coming. वो व्यक्ति सब कुछ दे रहा है सूर्य दे रहा है चंद्र दे रहा है बारिश दे रहा है अन्न दे रहा है I am living by the mercy of God alone. तो भगवान की कृपा से ही हम जी रहे हैं Therefore, an attitude of gratitude. इसलिए एक ये मनोभाव होना चाहिए कि कृतज्ञ होना चाहिए And when it comes to the point of gratitude, that is not the culmination. तो जब कृतज्ञता के स्टेज पे आता है तो कोई सब कुछ नहीं होता उसके आगे भी कुछ होता है Someone keeps doing something wonderful for you. अगर कोई बहुत ही अद्भुत कार्य करते हैं आपके लिए Unless you're welcome home. Hey, we're still here. All right, both for boo. ये पे Breakfast is in a few minutes. Don't worry. अभी प्रसाद मिलेगा We're all. You work hard for Krishna. I don't mean to make fun of you, but they have a joke. Prabhupada tells it. प्रसाद एक चुटकुला बताते हैं Devotees have a mantra for falling asleep, and like your Shaligram Shila, mantras to wake it up, mantras to put it to sleep. जैसे शालिग्राम शिला के लिए जागरण के लिए एक मंत्र होता है या शयन के लिए होता है तो भक्तों के लिए भी ये जो मंत्र होते हैं Devotees have mantras for waking up तो भक्तों का जो जागरण का मंत्र होता है वो है and mantras for falling asleep. और शयन का मंत्र है For falling asleep, शयन के लिए Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anyone know the mantra for waking up? कोई मंत्र Yeah, exactly. Bing, no, right back at you. तो तुरंत ही चल जाएंगे But the point I was trying to make is that, okay, gratitude, is that full stop? I've finished the cycle? तो बिंदु महाराज कहना चाहते हो कि क्या कृतज्ञता हम कृतज्ञ है क्या यही बस यही इस पे ही रोकना है हमको Someone does something wonderful for you again and again and again. और अगर कोई बार कुछ बहुत अद्भुत चीज करते हैं हमारे लिए If you're sane, अगर धैर्य और if you have any kind of heart, अगर हृदय है आपके पास what do? आप क्या करोगे You reciprocate and you do some service. कुछ सेवा करेंगे So they think, oh, you're bhaktas, oh, you're just, you're bowing down and you're doing this and you spend so much time. तो वो लोग सोचते भौतिक लोग सोचते हैं कि आप भक्त हो आप बस प्रणाम कर लो इतना समय बिताते हो Serving some imaginary God. कोई काल्पनिक I'm a man of practicality. और भौतिकवादी ये सोचते हैं कि मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ मैं Tagore's brother जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो भाई है
You know, Rabindranath Tagore won the he won the Nobel Peace Prize. जिनको ना नोबेल प्राइज The poem is called Gitanjali. What is it called? You know what he says in that poem? तो आप जानते हैं क्या Prabhupada says this. प्रभुपाद कहते हैं He says the most beautiful creation of God is a woman. तो वो कहते हैं उस कविता में वो कहते हैं कि जो सबसे सुंदर सृष्टि है भगवान के वो है स्त्री Prabhupada says the street sweeper knows that. I mean, you know, that's big news, you know. प्रभुपाद कहते हैं जो झाड़ू मारने वाले हैं उनको भी पता है तो ये कौन सी नई बात है I mean, Bhagavatam, I don't want to go into it, I'm a sannyasi, but Bhagavatam explains the beautiful form of a woman. तो भागवतम में भी वर्णन किया गया कि स्त्री का It goes on to describe that the eyebrows of a woman तो बताते हैं कि जो स्त्री का जो आईब्रोज होता है are like a bow. ये बाण की तरह होता है And from those bow comes the glance, like an arrow. तो उन बाणों से कि Boom! And Prabhupada says it pierces the man's heart and he's finished. तो धनुष की तरह है कि बाण आते हैं उनके नजर से और पुरुष का जो हृदय है उसको मार देते हैं So Bhagavatam knows the whole thing, and it knows the hows, the whys, the what fors, what to do. Bhagavatam has everything in तो it. भागवतम में सब कुछ होता है इसमें Jai Jagannath. So the simple point is that they may say so many तो things. लोग बहुत कुछ कह सकते हैं You know, the Prabhupada tells it, and I don't have a watch. I left my watch upstairs, and I have no idea what time it is. But I know it's getting close. Oh, there you go. So we'll end in just a minute, and then we'll take some questions. एक मिनट में विराम लेंगे फिर प्रश्न लेंगे Prabhupada tells a story. प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं Prabhupada tells so many stories. प्रभुपाद कई कहानियां People love stories. Vyasadeva told stories, Mahabharata, Ramayana, you know, I mean, it's because Valmiki, but the whole Bhagavatam is full of stories, you तो know. व्यासदेव कहानियां बताते हैं महाभारत और भागवतम जो So there was a rich man who died, तो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे जो and he had, बीमार हो गया I'm sorry, he had 4 sons. उनके 4 बेटे थे 3 were foolish and envious. तो 3 जो है बहुत बेवकूफ थे और ईर्ष्यालु थे There's a line in Shakespeare, sharper than the serpent's tooth is the ungrateful child. Yeah, it's a nice line, isn't it? Complicated. Anyway, so, you know, the ungrateful children. तो वो बहुत कृतज्ञ थे But one son was a good son. पर एक बेटा जो है बहुत अच्छा बेटा था So the father naturally left everything to the good son. तो जो पिता है उन्होंने सभी जो चीज है उनको दे दिया The 3 foolish, envious sons were mad like anything. तो जो बेवकूफ बेटे थे जो बहुत ईर्ष्यालु बेटे थे तो वो बहुत गुस्से So they devised a plan. तो उन्होंने एक योजना किया It's Prabhupada's story. प्रभुपाद जी ने बताया And it goes like this. वैसे So what they did तो उन्होंने क्या was किया every day the man would go from his house down to the river, take a bath. तो जो अच्छा बेटा है वो अपने घर से नदी तक जाते थे Some distance, and it was some distance to तो कुछ दूरी a में few वो minutes. कुछ मिनट चलना पड़ता था So one brother was stationed on the road, तो एक भाई जो थे खड़े थे one of the envious sons. एक जो ईर्ष्यालु भाई है वो And when the good son came walking along, जो अच्छा बेटा आ गया वहाँ the evil son, ghost, Gopal's become a ghost, and ran away. जो दुष्ट बेटा है तो वो चिल्लाने लगा भूत गोपाल भूत बन गया और भागे वहाँ से Our good son Gopal goes, तो जो अच्छे बेटा गोपाल है वो अपने आप को देखने लगे क्या हो गया he must have been sitting in the sun too long, I'm तो fine. उन्होंने सोचा कि धूप में ज्यादा बैठ गया शायद पागल हो गए ये He goes a little further down the road towards the river. कुछ दूरी में चले गए वो There's another brother. तो दूसरा भाई वहाँ खड़ा था He says, Vishnu, it's a ghost. Gopal's become a ghost. And he runs off. तो दूसरे भाई भी ऐसे चिल्लाने लगे विष्णु अरे गोपाल भूत बन गया फिर भागे वहाँ Now our Gopal's a little shaken the second time. तो दूसरी बार तो गोपाल Everything seems okay. क्या हो गया मैं तो ठीक लग रहा हूँ क्या हो गया? Further down the road, he meets the third brother who says, ghost. Like that, runs away. कुछ ही दूरी में फिर से तीसरे भाई से मिले वो और वो भी भूत जिला के भागे And our poor Gopal is so bewildered by this time, he gets to the river, he drowns himself to kill himself. Get free from the becoming a ghost. गोपाल है उनको यकीन हो गया कि वो मर गए वो भूत बन गए और नदी में जाके डूब के मर गए
Purport of the story is, उसका तात्पर्य ये है if we hear something enough times, अगर कुछ we चीज- become convinced of तो it. कुछ चीज को सुनते हैं बार 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 तो क्या होता है हम कन्विंस हो जाते हैं उसको सत्य मान लेते हैं The Nazi propaganda minister, तो जो नाज़ी का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर you know, Adolf Hitler's propaganda, his name was Goebbels, जो हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है and he said, उन्होंने कहा you tell a lie loud enough and long enough, and people will believe it. अगर कोई झूठ आप बहुत जोर से और काफी समय से बोलते हैं तो लोग उसको सत्य मान लेंगे And he said, don't tell a little lie. तो उन्होंने कहा छोटी सी झूठ People मत will बोलो। tell a big lie. बहुत बड़ा झूठ बोलो Because they'll think, well, they would never lie about तो that. लोग ये सोच रहे इसके बारे में तो झूठ नहीं बोलेंगे So we are been hearing since the day we came out of the womb, we've been hearing a lie. तो हम जब उस दिन से जब से गर्भ से निकले हम तो एक झूठ को सुनते आ रहे हैं We're this body, we're this mind. The goal of life is to satisfy the senses. Forget about the soul. Don't worry about death. Everything's happening by chance. Just eat, drink, and be merry. तो हम ये शरीर है हम ये मन है और जीवन का लक्ष्य है कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करना और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना यही करना है हमको Of course, the problem is people aren't married. It's not really working, you know. तो समस्या ये है कि लोग खुश नहीं हैं So we should be intelligent. तो हमको इतना बुद्धिमान होना चाहिए We should not be cheated by false propaganda of the materialists. तो झूठा प्रोपेगेंडा से हमको धोखा नहीं खाना है जो भौतिकवादी कर रहे हैं You know what Prabhupada said? You know, the Darwin evolution. तो प्रभुपाद कहते हैं डार्विन एवोल्यूशन के बारे में And there's so many holes in it. There are so many holes. उसमें कई गलतियां होती हैं उसमें Even if you actually go, if you go to MIT, if you go to University of Chicago, you go to Harvard, अगर they're also, they know that there's problems with the Darwinistic theory. तो अगर MIT में भी जाओगे हार्वर्ड में जाओगे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जाओगे तो वो लोग भी जो विद्वान लोग हैं उनको पता है कि कुछ ना कुछ गलती है डार्विन थ्योरी में I had a biologist, professor from Stanford, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक बायोलॉजिस्ट है जो महाराज को जानते हैं tell me. तो उन्होंने कहा He said, we know it's full of holes, तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कई गलतियां हैं उसमें but it's the best we've got. पर यही सबसे- He actually told me that. सबसे उत्तम थ्योरी यही है तो यही यूज करते हैं He said it's just a place marker till we come up with a better ये idea. बस कुछ ना temporary- He told me that. जब I was तक shocked. हमको जो सही थ्योरी ना मिल जाए तब तक यही यूज करेंगे I said, at least you're honest, you know. तो मैंने कहा कम से कम ईमानदार है ये So ईमान है। we've been told all of this stuff and we believe it. और ये सब चीज हमको बताया गया बचपन से और उसको उस पे विश्वास करते हैं But all the great Vedavyas, Narada, Devala, Sita, Ramanujacharya, Madhvacharya, Sankaracharya, तो वेद व्यास Vishnu Swami, Nimbarka Swami, what to speak of Sri Chaitanya Mahaprabhu. कई आचार्य रामानुजाचार्य विष्णु स्वामी माधवाचार्य और स्वयं चैतन्य महाप्रभु You know, they say in evolution it's a missing link. तो एवोल्यूशन में ये कहते हैं कुछ मिसिंग लिंक हो रहे हैं Yeah, they can't find out, you know, how it came from, evolved from some kind of simian monkey into whatever we are, you know, some common ancestor. बंदर से मनुष्य हो गए तो You know what Prabhupada said? तो प्रभुपाद जानते हैं क्या कहते हैं You know what the missing link is? तो प्रभुपाद कहते हैं जो मिसिंग लिंक है Prabhupada said, my foot in their face. प्रभुपाद ने मेरा लात उनके चेहरे पे। I heard Prabhupada say that. Then I heard Prabhupada, and Prabhupada would never back down. Prabhupada then, you can translate. तो प्रभुपाद को सुना महाराज ने तो प्रभुपाद हमेशा इस पे जोर देते थे Prabhupada said, actually, what evolution? तो प्रभुपाद कहते हैं क्या एवोल्यूशन You're still monkeys. And then Prabhupada said, your ancestors may be monkeys. तो प्रभुपाद ने कहा कि शायद आपके पूर्वज जो है बंदर होंगे He said, but my ancestors are the great Vedic sages. मेरे जो पूर्वज है वो महान वैदिक संत है The guy had nothing to say. He was just finished. और वो व्यक्ति चुप हो गया उनके पास कुछ कहने के लिए रहा नहीं So we are Vaishnavas. We are not fools. तो हम वैष्णव हैं बेवकूफ नहीं हैं Prabhupada said only a Vaishnav knows who is who and what is what. तो प्रभुपाद कहते हैं केवल एक वैष्णव को पता है क्या कौन क्या है और सही चीज के मायने हो जाते हैं We are not arrogant. हम अहंकारी नहीं हैं We think that there, but by the grace of God, go I. I would be a fool I'd be a fool just like them if it wasn't for my spiritual master and the sadhus and the shastra.
तो वैष्णव ये सोच रहा अगर भगवान की कृपा नहीं होती ना गुरु की कृपा नहीं होती तो मैं भी ऐसे बेवकूफ की तरह ही रहता. So we are humble, तो हम विनम्र हैं but we're also confident. पर कॉन्फिडेंट भी हैं. We're not arrogant, हम अहंकारी नहीं हैं but we're confident. पर कॉन्फिडेंट हैं. I was on a morning walk with Prabhupada. एक बार महाराज जी प्रभुपाद जी के साथ चल रहे थे सुबह. Sometimes Prabhupada would talk, तो कभी-कभी वो and sometimes he was quiet. He was just, in contemplation. कभी-कभी बस मनन करते थे तो कुछ नहीं कहते थे. So on this walk, Prabhupada was quiet. तो जब चल रहे थे तो प्रभुपाद चुप थे. And then all of a sudden he stopped, he put his cane down and he turned to us. तो फिर अचानक Maybe 15 से devotees. उन्होंने शरीर को रखा और पीछे 15 devotees, something like that. 15 And भक्त थे. he turned and he said, I know you're all atheists, तो प्रभुपाद ने कहा उन भक्तों से कहा मैं जानता हूँ आप सब नास्तिक हो but there really is Krishna. पर कृष्णा है वास्तविकता. And he just turned around and kept on walking. ये होके चलने लगे प्रभुपाद जी. So we know what the truth is, we know what is sane, we know what makes sense, we have consistent logic. तो हम जानते हैं सत्य क्या है, लॉजिक क्या है. And they may be saying so many foolish things. वो लोग कई चीज बोल सकते हैं जो मूर्खता. We just tune them out. हम बस उसको नजरअंदाज करते हैं. Prabhupada said Vaishnav preaching, followers of Mahaprabhu, जो महाप्रभु के अनुयायी हैं is we say, my dear sir, हम कहते हैं oh Panditji, ओ पंडित जी you're very learned, आप बहुत you're very sophisticated, बहुत उन्नति. but I beg you, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ please for a few minutes, कुछ समय के लिए कुछ मिनट के लिए put all of that aside ये सब कुछ कोने में डाल दीजिए आप. and hear the message of Sri Chaitanya आप Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु का संदेश है उसको सुनिए आप. Because if they hear the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu, it is so satisfying to the heart, as it says in this purport. क्योंकि अगर चैतन्य महाप्रभु का संदेश सुनेंगे तो हृदय के लिए बहुत ही संतुष्ट हृदय They actually get that satisfaction. जो वास्तविक संतुष्टि को मिलेगा. And I don't want to talk philosophy. और सिद्धांत के बारे में बोलना. All right, here's a nice big prashadam gulab jamun. ये And you take this nice sweet chanting Hare Krishna, और हरे कृष्ण का कीर्तन का शुभन करें. So that is the taste they're all looking for, but it is not sentiment. जो सभी ये स्वाद का वो खोज कर रहे हैं और ये भावुकता नहीं है. Oh, you sentimental Vaishnavs chanting and dancing. वो लोग कहते हैं आप भावुक वैष्णव हो बस नृत्य कर रहे हो गा रहे हो. But that chanting and dancing is supported by profound philosophy तो ये गान और नृत्य जो है बहुत ही गहरा सिद्धांत के आधार पे है. and powerful, consistent logic. और बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही गहरा लॉजिक है उसमें. Okay, we can end there. तो यहीं पे विराम देंगे हम. Now we'll take a few कुछ प्रश्न questions, लेंगे हम. just a few. कुछ And everyone's thinking that the person next to them will ask a question. सब सोचे जो बगल में है वो प्रश्न पूछेंगे. But help me out. I know you got a question. I want it. Does anyone else? Yes, sir. कोई और? Yes. Regarding Brahmaji, Yes. there is a reference to Brahmaji in this purport also. Yes. That absolute is unknowable by proper rights and purport. Even demigods like Rudra, Yes. Brahmaji. Unknowable by material means, and unknowable to its full extent. But go ahead and ask your question. Yeah, even by controlling deities of speech and ego, namely Vedas, Brahma, Rudra, and all the demigods. Okay, what's your question? My question is Brahmaji's position as our Param. No, I just answered that. You can translate. When it's, as I said in the very beginning of the class, जैसे शुरुआत में महाराज ने कहा Krishna is unknowable by any material means. कि कोई भी भौतिक तरीके से हम कृष्ण को नहीं जान सकते. It doesn't mean he's unknowable. ऐसे नहीं कि अज्ञान ही है वो. He has to be knowable by the right means. पर सही तरीके से उनको जानना है. And ultimately, Krishna cannot, as far as can be known, जितने like in the Gita, as far as can be known. जैसे हम जितने हम जान सकते हैं. Like, I mean, you can know a great personality. आपके किसी You can know something of their character. It's not that you don't know them, कुछ जान सकते हैं कोई महान. but you don't know everything about them. पर सब कुछ नहीं जान सकते हैं. So that's what that means. So Brahma, because Tene Brahma Hridaya Adakavaye, भागवत में ये श्लोक है. within the heart, Krishna revealed everything to Brahma. हृदय में Then Brahma सब knew. कुछ बताया कृष्ण ने.
by his own investigation. You know, he's out there on the lotus, he can't figure out what's going on. He tries to climb down the stem, and he never gets to the bottom of the thing. तो अपने बल से He goes ब्रह्मा जी back जान down. पाए, Oh, I'm sorry. फिर वो फिर से ऊपर गए And he sits on the lotus and doesn't know what to do. और कमल के फूल पे बैठ के उनको पता नहीं था क्या करना है He hears tapa. फिर उन्होंने सुना टपा, He performs austerity, meditation. फिर उन्होंने तप किया और ध्यान And with that, and with controlled senses and a steady, peaceful mind, नियंत्रित इंद्रियों के साथ और शांत मन के साथ that's and a humble attitude. और विनम्र भाव के That's साथ, like fertile soil. जैसे जो जमीन जो बहुत अच्छा जमीन है And then Krishna plants the seed of transcendental knowledge in that in Brahma's consciousness, that humble, purified, submissive consciousness, that within the heart, the seed of knowledge is planted. तो ब्रह्मा जी के जो चेतना में है जो बहुत ही विनम्र चेतना है बहुत ही अच्छा चेतना है तो उसमें कृष्ण ज्ञान का बीज वो बोलते हैं दिव्य And he- ज्ञान का। And when Narada is asking, you know, you appear to be, everything's coming from you, but you appear to be meditating on something higher. नारद मुनि कहते हैं ब्रह्मा से कि ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ आपसे ही आता है पर ये भी लग रहा है कि आप किसी और पे ध्यान लगा रहे हो Brahma says right there, ब्रह्मा जी कहते हैं he said, I'm not actually the creator. कि मैं सृष्टि का निर्माण I just take the seeds that Krishna has given me and I unfold them. But I don't create those seeds. The whole creation comes from Krishna. मैं कृष्ण से बीज लेता हूँ और उसको विस्तारित करता हूँ पर मैं जो बीज का निर्माता नहीं हूँ Brahma expertly unpacks it, तो ब्रह्मा जी but the seeds all come from Krishna. एक्सपर्टली उसका विस्तार करता है पर वो बीज जो है कृष्ण से आता है So that's what that means. So Brahma can, you know, don't worry. तो इसका अर्थ यही है Brahma Samhita is okay, don't worry. We're in good hands. ब्रह्मा जी ने बात किया And it's also meant to put us back in our position. ये हमको अपने स्थिति पे Krishna is unknowable. कि कृष्ण अज्ञात है Krishna is infinite. कृष्ण असीमित है And it puts us in that humble position that then as Krishna reveals himself. तो हमको उस स्थिति में डाल देना विनम्र स्थिति में और हमको निर्भर होना पड़ता है कृष्ण के ऊपर के वो अपने आप को स्फुरित And even a big personality, you don't know everything about और them. एक महान शख्स के बारे में आप सब कुछ नहीं जान सकते I mean, we know Modi, we see the picture, you see, President of the United States or whoever it is, तो हम मोदी जी को देखते हैं या यूएसए का जो प्रेसिडेंट हमको देखते हैं But at home, पर घर पे his wife is saying, hey, did you bring home the groceries? तो वो क्या Did you remember to stop and get milk? तो घर पे उनकी पत्नी So कहते हैं, sorry, "आप sorry, sorry, सामान sorry." खरीदा या दूध लाया तो वो कहेंगे सॉरी And his mother has a nickname for him, and his children have a nickname for him, बच्चे सब कुछ निकनेम And you can call him by a, like Queen Elizabeth, or she's got past King Charles. You ever seen King Charles's name? आपने देखा कि चार्ल्स का जो नाम है His full name is about 14 names. तो उनका जो पूरा नाम है Duke of this, Earl of that, this of that, so 14 many. नाम है पूरा But I guarantee you पर गारंटी देते हैं महाराज that he's married to her now, right? Or his children, they have a nickname for him. उनके जो बच्चे हैं उनका दूसरा नाम से बुलाते हैं And he relishes that nickname much, much more than his, Charles, Philip, Earl, Duke, this, that. That sweet name, laden with love, that's the name he relishes. वो जो नाम जिसे उनके बच्चे बुलाते हैं उसका वो ज़्यादा आस्वादन करते हैं ज़्यादा अभिषेक So Krishna's a Jita, he's a Chuta, he's so many things, right? अजीत है अच्युत है बहुत कुछ है But he likes to be Yasoda Nandana. और उनको पसंद He likes, he likes to be Nanda Nandana. उनको यशोदानंदन He likes to be Jamuna Tatachara. He likes to be Radhanath. That's what he likes. He likes to, he likes to be called Madan Mohan, पसंद है जब but he likes that Radharani is called Madan Mohan Mohini. He likes that even more. ज़्यादा पसंद है कि जब राधारानी को भजन मोहन मोहिनी So that's the sweet taste Prabhupada's talking about. That हाँ स्वाद है So he's unknowable, but he's known by the devotees पर in a most intimate way. भक्तों के द्वारा जाना जा सकता है बहुत निश्चित है Okay, one more question. एक और प्रश्न Arjun? Yes, sir. You said Vaishnava knows who is who. And what is what? How? Who is who and what is what? What do
definition for this? Huh? Who is who? Huh? How do we can? I know what he's asking. तो यहाँ प्रभु जी ये पूछ रहे कि महाराज ने कहा कि वैष्णव जानते हैं कि कौन कौन है और क्या क्या है, तो ये कैसा है, इसका वर्णन कीजिए। Have you ever seen this book? तो ये पुस्तक देखा आपने? What is this book called? श्रीमद् भागवत इसका नाम क्या? And what is this book about? कृष्ण। Yeah. Read the book. तो You'll know who is who and what is what. पुस्तक को पढ़िए, आपको सब कुछ Read the पता book. चलेगा। Read the book. पुस्तक पढ़िए। Read the book. पुस्तक पढ़िए। People don't read. हम पढ़ते It's नहीं। amazing. I have met devotees who have gotten initiated, जो दीक्षित है भक्त, who have not finished Bhagavad Gita. जिन्होंने भगवद गीता पूरा नहीं किया। What if Krishna changes his mind? What if in the 18th chapter he says, forget it. It's all, what? People haven't read Bhagavatam. भक्तों ने भागवत भी नहीं पढ़ा। Do you know how hard Srila Prabhupada worked to produce the तो Bhagavatam? आप जानते हैं कितना मेहनत किया प्रभुपाद जी ने। It ये did लिखने के not लिए। come easily. ये इतना आसानी से नहीं हुआ। Prabhupada put in a full day and a full night's work. तो पूरा दिन पूरा रात मेहनत किया प्रभुपाद जी ने। Prabhupada worked hard. प्रभुपाद ने बहुत परिश्रम किया। And when everyone else was asleep, और जब सब सो रहे थे, when he deserved a few minutes rest, जब उनको रेस्ट करना ही चाहिए था, when the whole world was sleeping, पूरे संसार सो रहे थे उस समय। because he had a few minutes of peace, क्योंकि उस समय उनको कुछ शांति की क्षण- he got out of bed, तो वो बिस्तर से उठे, he clicked on the light, लाइट को ऑन किया, and he gave us तो Bhagavatam. उन्होंने भागवत को लिखा। It was not easy. ये आसान नहीं था। And we don't read it. और पढ़ते नहीं हम। You read we don't read Chaitanya. Maybe we read Bhagavatam. We don't read Chaitanya शायद Charitamrita. भागवत को पढ़ते पर चैतन्य चरितामृत को पढ़ते नहीं हम। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, शिलापति ठाकुर कहते हैं, people will learn Bengali to read Chaitanya Charitamrita. लोग बंगाली सीखेंगे चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के लिए। But Prabhupada stayed up all night. और प्रभुपाद पूरे रात जगे। So we don't have to learn Bengali. तो हम बंगाली We just open the book. Everything's there. सब कुछ है पुस्तक में। So we have to read. तो आपको I have been reading महाराज Bhagavad Gita भगवद गीता for over 50 years. 50 से भगवद गीता को पढ़ रहे हैं। Every time I open Bhagavad Gita, I see something new. जब भी भगवद गीता Every को पढ़ते single हैं, time. तो महाराज को कुछ नया मिलता है। 50 साल से पढ़ रहे हैं, हर बार कुछ नया मिलता है हमको। So I'm telling you, you read just 5 minutes a day. I don't have time. लोग सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं, उस समय मेरे पास 5 मिनट तक पढ़ लिया। I don't know what it is in India, but I imagine it's the same. I'm going to say, I don't know what it is, what the number is, but I imagine it's the same. तो महाराज को पता नहीं संख्या क्या है, लगता है कि भारत में भी यही होगा। If you add up all the time that people wait in their car for the light to turn red, कि जब from red to green, ट्रैफिक लाइट में जब ट्रैफिक लाइट रेड से ग्रीन होता है, तो अगर उस समय को कैलकुलेट करते हैं कि कितना समय लगता है लोगों को वहां रुकने के लिए। of course in India they don't wait, but that's another thing. भारत में वेट नहीं करते हैं। But if they were to wait, but I mean we waste so much time. तो बहुत समय हम खो देते हैं। Talking prajalpa, looking at our phone, जब करते समय या reading the back of the cereal box or whatever it is. I mean, we waste so much बहुत time. समय गवाते हैं। And if we make a vow, अगर प्रण लेते हैं, hey, we're almost done. Yeah, you. खत्म हो गया। I raised 2 kids. I know what it's like. Where's the mother? Yeah, take responsibility. Or the father. Mother said, father can take some responsibility. There's a novel concept. बच्चे को संभालने का। Tell her father I should take responsibility. The mother always has to get it. Why not the father? पिता को लेना चाहिए। Anyway, Hare Krishna, I won't get in the middle of that. Sannyasis, I won't get in the middle of husband and wife. It's none of my business. गृहस्थों के बीच में नहीं फंसने वाला। But my point is that if we should make a vow एक प्रण लेना चाहिए। that I'm going to read whatever you can fit into your life. Oh, an hour a day, that's too much. I can't do it. I तो आप can't do it. सोचते हैं 1 घंटा ज़्यादा है। Half an hour. Nah, I can't do half an hour. 10 minutes. 10 मिनट। 10 minutes.
Read a verse in purport. एक श्लोक और तात्पर्य पढ़िए। Start with the Bhagavatam. Start with Bhagavad Gita. Start with whatever book you like. कोई भी book- And you make a vow, I'm going to read a certain number of pages a day. और एक प्रण लीजिए कि इतना पेज आप पढ़ोगे एक दिन में। It's just get in the habit. बस उसको आदत Before you go to bed, or when you first get up in the morning, before you have breakfast, whatever works for you. सोने से पहले- When you first come home from work, before you go to work, जो समय आपके whatever. बच्चे- Before you do your homework, after you do your homework. Don't do it when you're too tired. कि जब आप सोते हो तब मत पढ़िए आप। Read a few pages. कुछ पेज आप पढ़िए। And I'm telling you, you stay with it every day, you'll read your way through Prabhupada's books. और अगर पढ़ते रहोगे तो एक दिन- And it'll make you, if I don't eat a proper diet, what happens? अगर मैं ठीक से खाऊंगा नहीं तो क्या होगा? Why are the British called limeys? The British sailors. Anyone know why they're called limeys? अब जाते हैं Chinese के ऊपर- Because they took limes out on board the boat. Because when they sailed, because if you don't get enough vitamin C, you get sick, you get rickets. तो अगर आप जहाज में जाते हो Gotta have a balanced diet. बीमार हो जाओगे। In spiritual life, we don't need a balanced diet. तो क्या आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस डाइट नहीं जरूरत नहीं है? We need to come Haribol, Haribol. हमको चाहिए But we need to chant nice japa. कीर्तन चाहिए पर जप भी करना चाहिए। We need to read the books. पुस्तक को पढ़ना चाहिए। We have to have a diet of service. और सेवा का जो डाइट है वो होना चाहिए। And you take the medicine, you follow the diet, you learn everything. You get cured. दवाई और डाइट दोनों होना चाहिए और जब ये फॉलो करेंगे पालन करेंगे तब आप ठीक हो सकते हैं। Don't feel bad. It was a nice question. बुरा मत मानिए पर बहुत Okay, we can in there because part of our diet, विराम लेना पड़ेगा क्योंकि- have to take your vitamins, right? और vitamins का- Vitamin A, vitamin C. विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है There's also vitamin P और विटामिन पी भी होता for है। prashadam. प्रसाद, Essential to diet. जो बहुत ही So जरूरी है। we'll end here. Thank you very much. Hare Krishna. Glories to Prabhupada. Thank you. Hare Krishna. Don't make say a long thing. थैंक यू सो मच महाराज Hare Krishna. वेरी नाइस क्लास तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज जी आज का जो लास्ट श्लोक था वो वर्णन किए महाराज जी को हम धन्यवाद देंगे एक बार महामंत्र के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। परम पूज्य बद्रीनारायण स्वामी महाराज जी की जय प्रभुपाद। तो शाम को आप सभी बधाई 6 बजे महाराज जी का क्लास होगा। हरे कृष्णा। Thank you. प्रभुपाद। सभी के लिए प्रसाद है, प्रसाद का क्या पता है। Hey, one last thing. So I sat here, तो महाराज यहाँ बैठे हैं I did my job उन्होंने अपना काम किया as best I could. जितना भी कर पाए। Now, you all have a homework assignment तो now. आपको होमवर्क दे रहे हैं महाराज। What is your homework assignment? तो आपका होमवर्क क्या है? क्या है होमवर्क? Take prashadam? Okay, fine, fine. यहाँ प्रसाद लेना है, ठीक है। और But what else is your homework assignment? और क्या होमवर्क है? I'm serious. I'm not wasting my time. Read and not just I'll read. Make a vow. प्रण लीजिए कि पढ़ना है। I'm gonna read X minutes a day. इतना मिनट मैं पढ़ूंगा हर रोज। I'm gonna read one verse in purport. एक श्लोक और एक I'm तात्पर्य gonna read पढ़ूंगा। one page. एक पेज पढ़ूंगा। Can you make an old man happy and do that? क्या इस वृद्ध व्यक्ति को खुश करके ये कर सकते हैं आप? Thank you. Hare Krishna. धन्यवाद। Thank you. I'm sorry.